तो यहाँ से आप सारे डेट्स को याद रखेंगे क्योंकि these dates may be asked in examination. The first meeting of the Constituent Assembly, याद रखना है, it took place on 9th December 1946. ये याद रखना है. The first meeting of the Constituent Assembly took place on 9th December 1946 in the Constitution Hall, जिसको हम आजकल Central Hall of Parliament House बोलते हैं. तो यहाँ पे पहली मीटिंग हुई. ये याद रखना है that the Muslim League it boycotted the meeting. याद रखना है that means the members of Muslim League they did not attend the first meeting. और पहले दिन क्या हुआ, डॉक्टर सचिद आनंदा सिन्हा he was elected as the temporary president of the assembly in accordance with the French practice. ये याद रखना है. फ्रांस में क्या प्रैक्टिस थी, whenever they started to draft a constitution through a constituent assembly, वो क्या करते थे, the eldest member he was elected as the president. यहाँ भी यही हुआ because डॉक्टर सचिद आनंदा सिन्हा he was the oldest member from among the members of Constituent Assembly and he was elected as the temporary president on 9th December 1946. So the inaugural session it began at 11 a.m. or Dr. Sachin Ananda Sinha he was introduced, but the question is who introduced Dr. Sachin Ananda Sinha? Dr. Sachin Ananda Sinha, who was the temporary chairman of the assembly, he was introduced by Acharya Kripalani. ये आपको याद रखना है. That means पहले डाइस पे आचार्य कृपलानी आए, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किनको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, and he was elected as the temporary chairman following the French practice. इसके बाद December 11th 1946 वेरी इंपॉर्टेंट डेट. इस दिन क्या हुआ, बिकॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज अ टेम्पोरेरी चेयरमैन और टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको इलेक्ट किया गया एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. याद रखना है. एंड H.C. मुखर्जी ही वॉज appointed as the vice president of the constituent assembly. And finally Sir B.N. Rao, very important, Sir B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor to the constituent assembly. So on 11th December, Dr. Rajendra Prasad was made the president, H.C. Mukherjee as the vice president and Sir B.N. Rao as the constitutional advisor. उसके बाद 13th December 1946 very important date. इस दिन क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था which is known as the objectives resolution, and this objectives resolution it was moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू on 13th December 1946. objectives resolution क्या था, मैंने इसके बारे में आपको आइडिया दिया है अबाउट इन द वीडियो ऑन द preamble. तो यहाँ पे मैं इतना बोलूँगा दैट द objectives resolution it laid down the underlying principles of the constitution. और finally this objectives resolution in its modified form it became the preamble to the constitution of India. कभी इस पे क्वेश्चन आ सकता है what actually the preamble is. preamble किसका modified form है? So the preamble of Indian constitution is the modified version of objectives resolution. और कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है who drafted and moved the objectives resolution. आंसर ये है the objectives resolution was drafted and moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू. और कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है when was the objectives resolution adopted. याद रखना है that the objectives resolution was moved on 13th December 1946 but it was unanimously adopted on 22nd January 1947. this date you have to remember. So objectives resolution पे बहुत सारे questions आ सकते हैं. number 1 when was it moved, 13th December 1946. Number second question, who moved it? Pandit Jawaharlal Nehru. Third question, who drafted it? Pandit Jawaharlal Nehru. Number 4, preamble of Indian Constitution is the modified version of objectives resolution. Number 5, when was the objectives resolution adopted? It was adopted on 22nd January 1947. So 5 तरह के objectives और MCQs इस objectives resolution पे आ सकते हैं. उसके बाद ये याद रखें दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप टू इंडिपेंडेंस. तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट देयर वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो बिकॉज इंडिया टिल नाउ इट वाज अ डिपेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट बिकेम अ सोवरेन बॉडी. क्योंकि इंडिपेंडेंस तक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वर्कड अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट बिकेम अ सोवरेन बॉडी. ये आपको याद रखना है. नंबर 2,
द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इट डिक्रीज टू 299। आपको पता ही है पहले इसकी मेंबरशिप थी 389 और उसके बाद मैंने बोला कि प्रिंसली स्टेट्स दे डिड नॉट ज्वाइन बट बिफोर इंडिपेंडेंस इन अर्ली 1947 प्रिंसली स्टेट्स ने भी ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने भी ज्वाइन किया, सो हमारी 389 सीट्स फिल हो गई। बट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो मेंबर्स थे हु बिलोंग टू द पाकिस्तान उन्होंने विड्रा किया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्ट्रेंथ कम हो गई अप टू 299। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट which is very very important that the Constituent Assembly it also became a legislative body, क्योंकि अभी तक we were under British and the British Parliament it made laws for India as well, but now after independence we were no more a dependency of British, so we had to make laws for our own selves। so हम कैसे बना सकते थे, we needed a legislative body, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर नहीं था, हमारे पास एक ही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो वी यूज्ड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली as a temporary legislative body, so the constituent assembly it became a legislative body as well। so in addition to make the constitution, in addition to make or draft the constitution and adopt the constitution, इसका और एक function था, that is to make laws for the country, that's why it became a legislative body। this is a very important point। इसके बाद as a legislative body आपको याद रखना है when the assembly met as a constituent body, जब assembly काम करती थी for making or framing the constitution, at that time the assembly was headed or chaired by Dr. Rajendra Prasad। so Dr. Rajendra Prasad was the chairman of the constituent assembly when the constituent assembly acted as a constituent body, but when the constituent assembly met as a legislative body, क्योंकि मैंने अभी बोला कि इसका काम अब लॉ बनाना भी था, उस टाइम इसका चेयरमैन जीवी मौलंकर साहब थे। so याद रखना है the same constituent assembly it had two functions, number one it acted as a constituent body, इसका काम था constitution बनाना, when it did some functions regarding to the making of the constitution, उस time it was headed by Dr. Rajendra Prasad। लेकिन जब इसी constituent assembly का काम ordinary laws बनाना था, उस time it was headed by जीवी मौलंकर, ये याद रखना है। so these were the two important functions of the constituent assembly। और एक पॉइंट कभी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 September 1946 फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इट वाज मोर और लेस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, तो हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया दैट सिंस इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी लेट्स फॉर्म एन इंटरिम Government of India। This interim government of India was formed on 2 September 1946। और यहाँ पे याद रखना है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस it took majority of seats up around 69% of seats, and Muslim League it held all the seats reserved in the assembly for Muslims, and there were other members of some other parties such as the Scheduled Caste Federation, the Communist Party of India and the Unionist Party। इस मैं यहाँ इतना ही याद रखना है दैट द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 September 1946 एंड द कांग्रेस वाज इन मेजॉरिटी। आगे चलेंगे, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेट्स ऑन 22 July 1947 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग क्या है, इसकी लेंथ क्या है, रेशियो क्या है, कलर्स क्या है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है, दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहली फंक्शन थी दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी, द सेकंड फंक्शन इज दैट इट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड द थर्ड फंक्शन इज दैट द सेम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 July 1947।